Good evening, everybody. So, voice or video clear of some examples. So, chat box today. Please type yes. Audible. Good evening, all. I hope my voice is clear. So, please type yes. If you can hear me properly. Okay. Okay. So, here as I may discuss motion in one dimension part 2. ठीक है सो लास्ट क्लास हम मोशन इन 1D डिस्कस करते ले पार्ट 1 आज हम डिस्कस करे पार्ट 2 फर्स्ट ए चैप्टर टिके बड़ चैप्टर अछि आ एथरे बहुत एमिति कांसेप्ट्स अछि जो बडा का आगो को आगामी क्लासेस रे बहुत हेल्पफुल हो बहुत दरकार हो ठीक है तो ए कांसेप्ट बिना आगो चैप्टर्स बडा को बुझिबा में इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली ठीक अछि फिजिक्स रो चैप्टर्स बडा को इंटरलिंक है that the motion in one dimension or concept clear is motion in two dimension you can understand okay that the motion in two dimension if it is clear to you then you can understand work power energy ठीक है then if it is clear then you can understand Newton's laws of motion ठीक है then gravitation like this okay ठीक है so आज हम डिस्कस करेंगे motion in two okay so last class हम कुछ कहि दो छै last class हमें डिस्कस करते ले the equations of motion ठीक है okay equations of motion so equations of motion रे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन p is equal to u plus at सेकंड डिस्कस करते हैं s is equal to ut plus half at square थर्ड इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं v square minus u square equal to 2as and फोर्थ हम डिस्कस करते हैं Sn is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay. So this equation we have discussed. We'll take a time number of n minus n and n minus 1. These are difference. I mean, okay, understood. So these are the four different types of equation because and then we will discuss this later now. Okay, so these are the equations of motion. So g equal to plus at plus is equal to plus half at square. D square minus u plus d square equal to 2s. And in all these cases, because Sn minus accumulated. So this is your Sn. So this is u plus a by 2, 2n minus 1. Okay, so this is the formula that we got. But yeah, importance form examination, exam perspective. Okay, so we got assumption all these formulas are applicable when acceleration okay acceleration is constant acceleration is constant ठीक है आज हम और समझे कुछ important concepts discuss करूँगा first let us discuss about free fall okay about free fall ये free fall कहाँ पाते समझ ये वाला surface ये वाला ground okay ठीक है ये वाला ball ধরো যে বল কি উপরে ছাড় দিয়া গেল যদি ধরো যেମିତି ମାର୍କର ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ସିଧା ଆସି ମୋ ହାତରେ ପଡିଲା ଓକେ ଆଉ ୱାନ୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ ଦି ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ସିଧା ଆସି ମୋ ହାତରେ ପଡୁଛି ଓକେ ସୋ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ସେତେବେଳେ କୋଉ ଫୋର୍ସ ୟା ଉପରେ ଲାଗୁଛି କେବଳ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ସ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ରଖି ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଛାଡି ଦଉଛି ସିଧା ତଳକୁ ଆସୁଛି କେବଳ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାଇ वी कैन से दैट द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल ठीक है तो फ्री फॉल सेतेबेले कहि परिबे जेतेबेले केवल ग्रेविटेशनल फोर्स गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करछि आ कोनोसी भी फोर्स बॉडी ऊपर एक्ट करू ओके सो देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तळको
act करो ठीक है तो gravitational force कौन act करছে nothing but weight of the body m into g okay weight of the body is m into g weight water force हम पढ़िबा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रे force समय लिखंती mass into acceleration तो if mass रहला as it is acceleration जगह हम कौन लिखिले g that is acceleration due to gravity ठीक है मैं कहि दूं acceleration due to gravity कौन नला हम ताको gravitational chapter रे पढ़िबा ओके ठीक है तो देखो acceleration due to gravity होची कोन मु जेतले आपको छाडीले बॉडी तळक आसे टाइम बिकॉज़ ग्रेविटेशनल फोर्स लागुची तो बॉडी रे कुछ एक्सेलरेशन होची ये सब इनिशियली बॉडी के को वेलोसिटी था 0 इनिशियल देखो 0 मु छाडीले वेलोसिटी किछ v वेलोसिटी धारण तो गला सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन लास्ट क्लास हम डिस्कस करछन ऑलरेडी ओके सो दैट इज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काहे ना यहाँ पर ये फोर्स लागुची ग्रेविटेशनल force. Okay. So free follow I can write that a body is said to be in free fall if only gravitational force acts on it and no other force, no other forces acts on it. Okay. So that then we can say that the body is under free fall. Now exam point of view, your importance from definition पर चले मुझे ना. Exam में question है देखो that the body is under free fall. What condition देखियो? That means सेठी बुझिले कि केवल gravitational force लागु छै body पर कौनसी भी force लागु नै. ठीक है छे. बुझ पाइले समस्त concept. ठीक है बुझ परछन देन chat box रे yes लिखंतु ओके सो दैट मु भी जानि परिबी समस्त क्लियर तार किछि भी डाउट ना ओके ठीक अछि सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नेक्स्ट कांसेप्ट देखंतु हमें ए इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करि के गोटे रिलेशन बाहर करियो ठीक अछि गोटे नुवा जिंस रिलेशन किछि नै बाहर करियो सेमि किछि बहुत बडो वर्ड नै गोटे बहुत छोटो जिंस गोटे कंक्लूजन गोटे देखियो जोटा के एंट्री देखिले भी जाना ठीक अछि देखंतु ये गोटे सरफेस रहला ओके गोटे सरफेस रहला now the surface through h height this is gala h height okay h height ऊपर को मोर बॉल बन के ऊपर तिलिस okay h height ऊपर गोटे बॉल को मो थ्रो कर okay तो सरफेस को बिहाइंड में एंड सरफेस में बॉल को थ्रो कर ओके तो सरफेस में जो बॉल को थ्रो कर बॉल कितनी हाइट से जाई छै h हाइट है h e हाइट है मोर तो मन के नोट हो छै देखो ये गला बॉल एंड ये गला h हाइट ठीक है बॉल को h हाइट जाए थ्रो कर अच्छा बॉल को तुम h हाइट जाए थ्रो कर दी तो कितनी की वेलोसिटी थ्रो कर दी सेम किसी इनिशियल वेलोसिटी थ्रो कर दी इनिशियल वेलोसिटी थ्रो कर दी एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज मान जो वेलोसिटी हम स्टार्टिंग में थ्रो कर दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो वाला फाइनली कौन है ऊपर स्टॉप किया बॉल वाला धरम जो स्टाइलस है अपन ऊपर पिंगले कोन तळो बसेला था देखो ऊपर गला तापरे तळो बसे ऊपर गला तळो बसे तो ऊपर गोटे पॉइंट रे वेलोसिटी 0 होछि बोली तो ये तळो बसछे ना जदी गोटे पॉइंट रे वेलोसिटी 0 होंतनी कोन तळो बसंदा नै ये तो ऊपर पड़ा बुझ पाइले समस्त अंडरस्टूड ओके सो प्लीज टाइप यस जदी बुझि पाइले ओके सो कोन होछि ऊपर जाउ गोटे पॉइंट रे वेलोसिटी 0 होछि देन ये तळो को सो ऊपर वेलोसिटी कते फाइनल वेलोसिटी ऊपर फाइनल वेलोसिटी v is equal to 0 उस पर u रे वाला फाइनल वेलोसिटी v is equal to 0 होगा ओके so that means let us see here they can use the equation v square minus u square equal to 2as ओके अच्छा जब हम ई इक्वेशन यूज करते ताले कोन और सब जाना अछि देन एके किछ बात करी होबन ओके धरो तो जब हम बात करै तो चाहू छी सेम टाइम ओके और लेट मी यूज दिस then once use करें v is equal to say u plus at मन यूज करछि ओके v is equal to u plus at यूज करछि ताले कोन हो यार फर्स्ट इक्वेशन मोशन देखो हम सिखो छी केमिति इक्वेशंस अप्लाई करें दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन सो इफ जब v जाना होते v के 0 u होछि as it is u रहला g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते टाइम लागु छ तो बाहर करे के मो जानि पारि मो बाहर कर पारि तो सर जे केते टाइम लागु छ ओके उसका अच्छा सो देखो वर्तमान इठनु कोन लिख करी जदि मु सेकंड इक्वेशन
ହେଲା s is equal to ut plus r equals ठीक ଅଛି ଏତେ କେବଳ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଇକ୍वेशन ୟୁଜ କରିବି v square minus u square equal to say 2as ତାର ମତେ କଣ ଜାଣିପାରିବି s ହଉଛି କଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଠି h ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଗଲା that is nothing but displacement h is equal to s ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଟପ ପୋଜିଶନ ଭେଲୋସିटी 0 ମୁଁ v ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବି ଯଦି ଏଇ ଇକ୍वेशन ୟୁଜ କରୁଛି ଏଠି v ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବି 0 square minus u square equal to 2 minus g into h अच्छा minus g चक्कर कौन बहुत भलर बुझंतु एई थरे पिला प्लस माइनस कर दियन फाइनल आंसर भूल आसे एटा कोठी प्लस नेबे कोठी माइनस नेबे जी देखो वेलोसिटी हम सब बड़े पॉजिटिव ना ओके वेलोसिटी हम सब बड़े पॉजिटिव ना काहे के ना कोई ना सब बॉडी ऊपर गले दैट मींस वेलोसिटी डायरेक्शन कौन रहला देखो ए बॉडी को ऊपर थ्रो कर वेलोसिटी डायरेक्शन केम रहला ऊपर ठीक है सो वेलोसिटी हम लेले पॉजिटिव अच्छा जदि गोटे बॉल हम ए बॉडी ऊपर जाउची वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर को रहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केमिति एक्ट करी तळ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सब तळ पे एक्ट करी सो इट हम कौन लिखिबो वेलोसिटी आउट एक्सेलरेशन both are in opposite direction both are in opposite direction now velocity and acceleration both are vector properties वो last class में कहते आपको तो हमें motion in 2 dimension रे भी पढ़ा ठीक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स सो वेलोसिटी ऊपर को रहला सब गला सेटा बॉडी ऊपर को जाउची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तळु को आସୁची सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेते पई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बुझ पारले सेते एक्सेलरेशन इज नेगेटिव जदि वेलोसिटी तळु को थांता then acceleration and velocity are in same direction then acceleration will be positive को acceleration due to gravity will be positive सेटा सब बडे मन रखंतो मोर स्टेटमेंट को लेके होते ओके if velocity and acceleration are in same direction then acceleration is positive. If velocity and acceleration are in opposite direction, then acceleration is nil. ठीक है बिल्कुल है because direction change हो गया they are vector quantities they depend both on magnitude as well as direction okay so it is 0 आसीला सिंपल लिखि minus u square is minus 2g into h so minus minus कटि गला h can be written as u square by 2g बुझा now this is equation 1 अच्छा वर्तमान ऊपर जेतबेले धरंतु ये ही गला बॉल ऊपर तळु ऊपर फिलिले ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 होला 0 होला पर कोन होची ये तळु को भी आसुची ओके ये 0 हो गला सेटु ये तळु को बसेला तो जेतबेले 0 ही कि ये तळु को आसुची ऊपर 0 होला तळु को बसेला जो 0 ही कि तळु को आसुची सेतबेले इनिशियल वेलोसिटी केते हिजो 0 हिजो देखो ऊपर गला पहुंच गला जोटा फाइनल वेलोसिटी जेत तळु को आसुची सेटा इनिशियल वेलोसिटी होबो ना जेतबेले ये फाइनल वेलोसिटी तळु को आसिला बेलको ए फाइनल इनिशियल हिजो तो फाइनल केते 0 जदि फाइनल टा इनिशियल हे गला त इनिशियल वेलोसिटी केते हिजो तळु को आसिला बेलको 0 okay so when body moves in downward direction then initial velocity is equal to तार कॉल करेंगे v square minus u square देखो जब तळ को माने बॉडी रो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज व्हाट वी से अब g कौन है पॉजिटिव ठीक है if velocity and acceleration are in same direction then acceleration is positive so v square minus is u square equal to 2 times of g into h means 2as जगह में कौन 2g into h because s is equal to displacement which is equal to h so find initial velocity 0 final velocity v square by 2g is h okay, so this is equation 2 this is equation 2 now देखो तो 1 and 2 both are same or not h is equal to u square by 2g and h is equal to v square by 2g ठीक है height का same height का change हो can you write from 1 and 2 u square by 2g is equal to v square by 2g so 2g कटि गला ताले u square is equal to v square
दी पटे मु रूट ओवर नै जी u इज इक्वल टू v ता माने कोन या अर्थ कोन मींस गोटे बॉडी जदी धरंतु 2 मीटर पर सेकंड ऊपर जाई छी से तळको भी केते की वेलोसिटी रे आसीबो 2 मीटर पर सेकंड बुझ पारे तो जदी गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर को जाउ छी वॉइस बहुत लो आछी अ जस्ट अ सेकंड एबे ठीक अछि कि एबे वॉइस ठीक अछि अभिप्सा इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर नाउ ना एबे भी लो आछी ओके जदी लो आछे एबे देन आउथर कमेंट करंतु लो ना हाई लो जदी लो टाइप करो ठीक अछि जदी ओके टाइप करो ओके फाइन ठीक अछि सो u is equal to v ऑलराइट सो दैट मींस जदी गोटे बॉडी जति वेलोसिटी ऊपर जाउछ बॉडी सेति वेलोसिटी तळको आसी ओके सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कंक्लूजन अंडरस्टूड सो दैट मींस देखो जति की वेलोसिटी रे जाउछ कारण u वेलोसिटी रे गला केति डिस्टेंस गला h डिस्टेंस गला दैट मींस जति टाइम ऊपर को लागियो सेति टाइम तळको आसे अपन लागियो बुझ पारे ओके so next you can write down that if u is equal to v and distance covered u is equal to v and distance covered is h then time of ascent now speed is equal to distance by time is equal to distance by speed okay so distance कितने h by v time of ascent अर्थ कौन time taken by the body to go up बुझ पा रहे हो so time of ascent is the time taken by the body to go up बुझ पा रहे हो understood now देखो so the time of ascent is taken now से time of descent टाइम ऑफ डिसेंट कौन लिखना है सेम डिस्टेंस h कवर करो डिसेंट में तळु को कितनी वेलोसिटी है v वेलोसिटी है ठीक है सो व्हाट आई कैन राइट टाइम ऑफ डिसेंट इज द टाइम टेकन by the body to come down to come देखो वर्तमान u is equal to v that means this time of ascent will be equal to time of descent or not u is equal to v okay so u is equal to v h the same right that means this time of ascent will be equal to time of descent okay so I can write down that whole time of ascent is equal to time of ascent is equal to time of descent माने जति के टाइम लागु छु ऊपर जेबा पय सेति के टाइम लागु छि तळु कासिरो तारे टोटल टाइम केति के लागु छि गोटे बॉडी ऊपर जाई के तळु कासिरो पय टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ descent टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ descent ताको कोन कहंती टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ओके सो टोटल time of flight is equal to time of ascent plus time of descent. Okay. So since they can if time of ascent is equal to time of descent, so can I write total time of
flight is equal to 2 into time of ascent or 2 into time of descent. Okay, anything is correct, we can write any of this. Okay, बुझ समझते ठीक है जी. So just you can note down the keywords. Okay, or any doubt from this you can ask me. Okay, बुझ समझते. Okay, so that बुझ then type yes in the chat box. ठीक है. Okay, so चलो we will continue with the next concept in this chapter. बहुत important topic हम discuss करिवा है, that is the relative velocity and बहुत easy topic भी सेटा. ठीक है, बहुत easy way रे भी तक हमें discuss करिवा, समस्त बुझ परिबे. ठीक है, प्रश्न वार किछ नै, यदि कोन doubt then मते chat box रे पचारिबो. Okay, ठीक है. So next topic, relative velocity. Relative relative velocity अर्थ कौन? Relative velocity means धरंतु ठीक है, तमे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे, तम सांगर संगे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, माने दी जन जक सेम स्पीड रे जाउछ, तमे ताको देखुछ से तमो देखुछ, तमे दी जन जण जण देखि तम कोन लागे, तमे दी जण एया लागिवो जे तमे दी जण जक रेस्ट रे अछि, माने तम दी जण जक गोटाय जगह रे अछि, दी जण जक भीतर केहि मूव करू, काहे कि दी जण जक सेम वेलोसिटी रे जाउछ. जदि रिलेटिव वेलोसिटी हम देखिबा, रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ तम सांगर स्पीड तम तुलना रे, तम सांग कते स्पीड रे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर, तमे कते स्पीड रे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक अछि, देन तम दी जण भीतर रो स्पीड माने तम सांग माने तम दी जण भीतर रो स्पीड डिफरेंस कते 0. बुझ पे, दैट मींस दी जण जक कोन रेस्ट थिला भलिया देखाछ. एबे धरा तमे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर, तम सांग आसिला 20 किलोमीटर पर आवर, ताहले कोन हो, तम कोन देखो जिवो, तम सांग तमको अधिका स्पीड रे जाउछ, केते अधिका स्पीड रे जाउछ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाउछ. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. बुझ पाइले. ठीक अछि. ना आज होचे सेकंड क्लास अवेक्षा, फर्स्ट क्लास यूट्यूब रे अवेलेबल अछि, मानिक स्मार्ट क्लास रे, तो तमे देखो देखि पारा. ठीक अछि. सो आज सेकंड क्लास फिजिक्स. ओके, ठीक अछि. अच्छा, सो relative velocity अर्थ कोन? The velocity of one body with respect to another body. That means तम गोटे बॉडी रे बसी कि आ गोटे बॉडी को जदि देखुछ, धर गोटे ट्रेन जाउछ, तम ट्रेन रे बसिल, तम साम देखिलो साइड रे आ गोटे ट्रेन गला, तो सी ट्रेन तुमको जति स्पीड रे देखा छिबो, that is the relative velocity of that body, से जो ट्रेन जाउ तम देखुछ with respect to your train. बुझ पर, understood? So what is relative velocity? So it is the velocity of a body with respect to another body. With respect to another body. ठीक है. जल्दी देखो लिखिली, this is a body A and A कितने स्पीड रे जाउछ, से 10 किलोमीटर पर आवर. And this is another body B, कितने स्पीड रे जाउछ 20 kilometer per hour. Now what is the relative velocity of B with respect to, देखो जहां respect रे बात हो से परे रहला, what is the relative velocity of B with respect to A, तार कौन लिखिबे, this is VB minus VB. So this is equal, देखो minus लिखि लिखाएंगे because these are what velocity. Velocity means this is a vector quantity and d का जगह velocity कौन same direction में ଅଛି. Same direction means मैं कौन करेंगे minus करते. Okay, so VP minus VA, so this is 20 minus 10 kilometer per hour. Okay, so that is why I can write this is 10 kilometer per hour. ठीक है, उसका 10 kilometer per hour डायरेक्शन कौन रहेगा, towards right or towards east. ठीक है, जहाँ भी करंट सेम डायरेक्शन रहेगा, so towards or right लिख देंगे. क्लियर. ओके, सो वर्तमान देखो जल्दी आपको एनके लिखुछ, A एपटू बस 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड. ठीक, एंड B एपटू गला एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. तो वर्तमान देखो बोथ आर व्हाट, both are in opposite direction. बुझ पारले. एंड हम कहां से डिस्कस करछन वेलोसिटी.
velocity is a vector quantity. Vector quantity means see magnitude और direction दीटा ऊपर depend करी. Magnitude होची कौन ये जो 10 km per hour हम लिखचंती 10 हैला magnitude kilometer per hour हैला unit ठीक है. So 10 km per hour ऊपर depend करूछु magnitude and direction पर भी depend करिवो. तो जब भी हम direction को प्लस नेली याको कोन नेली माइनस नेली बुझ पाइले याको मन नेली माइनस जदि मु लिखुची फॉर एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तान मु कोन लिखिबी va माइनस bb इथे जेमते लिखिबी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a तो vb minus va so similarly relative velocity of a with respect to b so this is equal to va minus vb बुझ पाइले so ये देखो सेम लिखते हो this is va ये तो मतलब प्लस साइन माइनस vp ର डायरेक्शन कोन अपोजिट कोन लिखिबो माइनस तो माइनस माइनस हो गला प्लस so कोन लिखिबो va plus b so this is the relative velocity of a with respect to b बुझ पाइले ठीक अछि तो वेरी सिंपल ए दिटा फार्मूला के मन रखबा पड़िबो तो मन रखबे टाइम किछि मन रखबे एथरा नाही भी ओके जस्ट यू हैव टू सी सेम डायरेक्शन गला जदी मो माइनस करी अपोजिट डायरेक्शन आसेले मो प्लस करिबी ओके क्लियर बुझ पाइले समझते ठीक है सो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स आप जब बुझी परछंती समझते ओके आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ओके सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है सो हम यार कुछ क्वेश्चंस भी करेगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट ओके सो यार स्क्रीनशॉट ले जाने का कीवर्ड्स के नोट कर दिया ओके देन वी विल कंटिन्यू ठीक है अच्छा सो देखो किछटा में इंपोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर किछटा समरी हम डिस्कस करिवा ये थिला हमर फर्स्ट चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन किछ समरी हम डिस्कस कला पर हम यार किछि प्रॉब्लम्स सॉल्व करिवा जो बडा प्रॉब्लम्स हम एग्जाम रे आसीबार हाई चांसेस अच्छा ठीक है हम सब वेराइटीज रो कवर करिवा ओके सो देखो इट इज सो इंपोर्टेंट points. Okay. So important points हम डिस्कस करेंगे important point is first हमें देखिले कौन rectilinear motion का कहते हैं ठीक है so motion okay motion in one dimension is called rectilinear motion rectilinear motion and then next also one of frame of reference because frame of reference अर्थात this is point of reference plus time means गोटे point रो जो भी हमें गोटे object रो distance measure करछंती so this is the origin ठीक है body एठी अछि ये so this distance from both this say 2 centimeter then this O point becomes what ये दिगला हमारा point of रेफरेंस ठीक है अच्छा गोटा बॉडी की जो ओ है डिस्टेंस का 2 सेंटीमीटर कवर करने से टाइम लगेगा 2 सेकंड जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट मींस 2 सेकंड से गोटा बॉडी एतिक डिस्टेंस कवर करची 2 seconds of the body take distance cover करची that means this is called as frame of reference okay ठीक है and then next we have seen what is distance okay distance we should discuss करें we have discussed about displacement distance है कौन actual path covered by your body and displacement होची कौन displacement is the shortest path or shortest distance from initial to the final position of a body okay and then we have discussed velocity then we have discussed acceleration velocity is change in displacement with respect to time acceleration is change in velocity with respect to time okay and then we have discussed about jerk is change in acceleration with respect to time meter per second cube which are the same unit then uniform motion and non-uniform motion okay uniform motion and non-uniform motion okay non-uniform
motion. ठीक है? So uniform motion and non-uniform motion का हमें देखेंगे. If the displacement or if the distance covered by the body is equal in equal interval of time, ताले हम कौन करेगा? That the motion is uniform motion. नहला ताले हम कौन करेगा? Non-uniform motion. ठीक है? Understood? And then हमें देखेंगे what is instantaneous velocity. Instantaneous velocity एक mathematically केमती लिखते हैं dv और ds by dx by dt will give instantaneous velocity and average velocity. Next हम लिखेंगे average velocity. So average velocity थिला ठीक है change in displacement with respect to time. Okay, ठीक है या हमें then next what we have seen the equations of motions. Equations of motion. ठीक है ये कितने बार applicable? Okay, equations of motion. So it is applicable under being applicable under constant acceleration. Under constant acceleration. Okay, ठीक है. And what are the equations of motion? First is v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus half at square. We have t square minus u square is 2as and fourth वाला s n is equal to u plus a by 2 2n minus 1. Okay, ठीक है. So these are the equations of motion we have discussed. डिस्कस कर लें फ्री फॉल. फ्री फॉल कौन होते हैं? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स विल act. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम कौन डिस्कस करें? फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, बुझ पार्सन समझते? ठीक है. सो प्लीज टाइप यस. ओके, नले थम्स अप छाड़ନ୍ତୁ चैट बॉक्स रे सो दैट ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ everybody is अंडरस्टैंडिंग. समस्त बुझी पारछंती तार किछि प्रॉब्लम होनी. ओके, ठीक अछि. सो देखो ठीक. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी. सो रिलेटिव वेलोसिटी होती कोन ना? इट इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ one body with respect to other. The velocity of v with respect to v is va minus v. Okay, so these are the important summary, ठीक है, or a quick revision of the chapter in terms of concepts. Okay, ठीक है. So now we will go to the question answer session. ठीक है, where we will apply, ठीक है, whatever we have studied. Okay, बुझ पहले समझते हैं. ठीक है. So देखो तो how we are going to solve. So on question approach what we will see. Okay, so question we will see जे केमिकल how we should approach a question. ठीक है, solve करिए फाइनल आंसर तो बात कर दे करेंगे, but how you should approach or how you should solve the question. Okay, so that you can solve any question in the exam. ठीक है, केमिकल अप्रोच करबा में देखो फर्स्ट थिंग जहां डेटा देछि ताको हमें लिखि सेमिति लिखि दबानी कि जहां कोन फार्मूला लागिवो ताको हमें भाबिबानी. ए दिटा जिंस जदि हमें छाड़ दबा. ठीक है, कोन लो आसुचे the internet connection both use करछि. ओके, ଗୋଟେ सेकंड ମୁଁ रिजॉल्व कर दउछि. ମୁଁ ଆସୁନି କାରଣ ଭଏସ ତ लो आସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. ମଝିରେ ମଝିରେ लो ହେଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି. ଠିକ କରିକି
ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଭଲ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଠି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୋଉଠି ଅଛି ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବି ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସୁଛି ସ୍ଲୋ ओके ठीक है मैं टेक्निकल टीम को पचारे ଏବେ ଯେ इंटरनेट इश्यू ପାଇଁ ବୋଲି ଭଏस ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି ठीक है सो काइंडली कोऑपरेट ମୁଁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ठीक है सो दैट ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭିବ ओके ଏବେ ଠିକ ଆସୁଛି କି ଇଜ ଦ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ନାउ इज द वॉइस क्लियर नाउ ओके ठीक है सो देखो तो केनटा में क्वेश्चन को अप्रोच करियो फर्स्ट इवेंट डाटा देन कोन फार्मूला यूज हो भाबीबा नॉट लाइक दैट सेमिति करले क्वेश्चन जमा भी फिजिक्स रे सॉल्व करि परिबो तमे तमे केमिति पढबा क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड भलरे पढिबा भलरे बुझिबा सिचुएशन कोन दिया हिच सिनेरियो कोन दिया हिच देन हमें चेष्टा करियो जे कोन कांसेप्ट लगेबा हमें कांसेप्ट को रिकॉल करियो फार्मूला नै ठीक है हम कांसेप्ट को रिकॉल करियो एंड से कांसेप्ट को हमें अप्लाई करियो ठीक है जेटा हम कांसेप्ट डिस्कस करथिले सो हम जेमति जो भले कांसेप्ट को डिस्कस करथिले हम सेही भले कांसेप्ट अप्लाई करियो एंड वी विल गेट आंसर to any question that we solve in physics okay देखो first कौन करेगा let us understand situation कौन दिया है the position of an object moving along x axis is given by x is equal to a plus b square okay position of an object moving along x axis okay so this is say yes वाला xy so the object is moving along x axis माने यहाँ ऊपर जाऊँगी and is given by position x is equal to a plus b square that means now 8.4 and object को जेकौन से गोटे position रखिबे जेकौन से गोटे location रखि and that position होची x is equal to a plus b square ठीक है where a is equal to 8.5 b is equal to 2.5 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड ठीक है दोस्तों so it is a और b का वैल्यू दिया दिया है and it is measured in seconds कौन सा सेकंड में मेजर कराया है t को सेकंड में मेजर कराया है ओके एंड ऑलरेडी a b का वैल्यू दिया गया है दैट मींस a और b वैल्यू कौन कांस्टेंट अच्छा कांस्टेंट कौन है t स्क्वायर दैट मींस यदि मैं t1 पकेबी मते x रो गोटे वैल्यू मिलिबो t जगह 2 पकेले 2 स्क्वायर 4 इज गोटे वैल्यू मिलिबो t जगह 3 पकेले 3 स्क्वायर 9 इज मते गोटे वैल्यू मिलिबो x रो बुझिपारे दैट मींस x फाइनली कहां ऊपर डिपेंड कला a b तो कांस्टेंट सो x डिपेंड करछ कहां ऊपर t ऊपर बुझिपारे ताले गोटे पोजीशन जे दे दिया गला दैट मींस ए पोजीशन को कोन जानि जे गोटे बॉडी रे किछि डिस्प्लेसमेंट एंड से डिस्प्लेसमेंट होला पर बॉडी रो लोकेशन कोठु जानि with respect to t means जब मतलब टाइम जଣା तो 4 सेकंड पर बॉडी कोठु कोठु पूरा पचार हम कहि दे पारि मुझे 4 पके देबो t जगह 5 सेकंड पर बॉडी कोठु अछि t जगह 5 पके 6 सेकंड पर कोठु अछि t जगह 6 पके एंड फाइनली आई कैन गेट इट ओके तो से गोटे इक्वेशन होगा and is measured in seconds what is the velocity at t is equal to 0 second at अर्थ हम कोन कहइतली जो भी ए जो वर्ड at t is equal to 0 आसी गला and t is equal to 2 seconds या तो कौन what is the velocity at t is equal to 0 second and at t is equal to 2 second ए at अर्थ कौन that means instantaneous ठीक है and what is the look this second also because you screen the video bachega la to voice थोड़ा सा डिफरेंट गोटे सेकंड हाँ ओके फाइन ठीक है सो आसी गला देखो सो x is equal to a plus b square at t is equal to देखो instantaneous okay I would question what is the average velocity between 2 is equal to 2 second and
4 seconds between आसीगला माने is it instantaneous ना ये केवल कहाँ पे इंडिकेट करना एवरेज हमें बात करें ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन पचार जी instantaneous velocity we have to find out velocity at अर्थ कौन ये velocity at अर्थ कौन instantaneous velocity okay तापर पचार देची we have to find out between them okay उसको ऐसे देखो so first let us find out velocity or what is it okay so voice तो ठीक है ये हमारे चेक करेगा ओके ठीक है मझे मझे नेट स्लो हो जाउथिबो तो सेट बोले सो टेक्निकल एरर करते पारे इंटरनेट से ओके सो देखो सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकंड्स 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स ठीक है सो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ओके और इंस्टैंटेनियस कैसे सॉल्व करना इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी at t is equal to 0 second. Instantaneous velocity होची कौन t is equal to dx by dt. उस पर जो dx by dt डिफरेंशिएशन अच्छी गला से हम कौन करेगा will go for instantaneous. उस पर instantaneous आपका कौन t is equal to dx by dt. माने d डिफरेंशिएशन रहेगा. जो डिफरेंशिएशन लेके instantaneous. Instantaneous माने कौन बहुत कम टाइम बहुत कम चेंज at that particular instant of time. उस पर at that particular instant of time. So second we will call it d is equal to dx by dt means d by dt of a plus bt square. So d कौन होगा देखो देखो हम कैसे लिख पाएंगे d by dt of a plus d by dt of b t square. तो ये कांस्टेंट a वैल्यू ऑलरेडी दिए 8.5 कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0 ठीक है कौन कौन ये रहेगा तेरे b t square हमें कहां रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं t रेस्पेक्ट तो इट consider t square b constant multiplied with h b सेट में b बाहर का आसीला मैं कौन लिखिबी d by dt of t square d by dt of t square तो हम समझ जाने थे d by dx of x to the power n ये डिफरेंशिएशन का वाला फार्मूला this is equal to nx to the power n minus 1 nx to the power n minus 1 तो इसको कौन लिखिबी मैं d is equal to b dot ये देखो d by dt 2 it x जगह कौन रहेगा t रहेगा n जगह कौन रहेगा 2 रहेगा ताली फार्मूला पके दल कौन होगा 2t to the power 2 minus 1 n minus 1 so this is equal to b into 2 times of t to the power 1 अच्छा at t is equal to 0 second तो एबे मु कौन करिवि t द वैल्यू पके देबी 0 ताली केता हो b into 2 times of 0 to the power 1 which is equal to 0. So that means at t is equal to 0. Ketik instantaneous velocity? It is also 0. Which one? Understood? 0. So next we have to find instantaneous velocity or what is the velocity at t is equal to 0 second? And t is equal to 2 seconds. Which one? And t is equal to 2 seconds. So we J same v v is equal to dx by dt लिखिली again देखो डिफरेंशिएट करी कौन लिखिबी d by dt of a plus dt square constant differentiation जेनु करथिली 0 आसीगला plus b into 2t to the power 1 आसीगला so this is 0 plus देखो b ର वैल्यू केते अछि 2.5 into 2 and t ର वैल्यू केते कहैछि एथे 2 सेकंड तो into 2 लिखिली so केते हेला 2 2 जा 4 हेला 4 into 2.5 4 into 2.5 देखो 2.5 into 4 एबे मनर करले टाइम अधिक लागे 4 into 2.5 अर्थ कोन 2.5 चार थर तो 2.5 दि थर ले केते 5 आ दि थर ले केते आ 5 माने 5 5 10 बुझले तो एमती कले कैलकुलेशन स्पीड हो आंसर केते बाहरला 10 मीटर पर सेकंड बुझले 10 मीटर पर सेकंड बुझले 2.5 2.5 5 आ दि थर 5 plus 5 10 so 10 मीटर पर so first bit our clear हो गया second देखिए what is the average velocity between t is equal to 0 2.0 t is equal to 4.0 आणि ये देगा हमको ड्यूरेशन सो देखो तो एंड लिखिबा ओके सो एवरेज वेलोसिटी ओके एवरेज वेलोसिटी सो एवरेज वेलोसिटी होची कोन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओके सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट change in displacement divided by time divided by time तो वर्तमान देखो 80 देखो गोटे आगे इसे 2 सेकंड रखला बॉडी देन 4 सेकंड्स पचरते तो हमको ई बीटा टाइम डिफरेंस भितर केते की बॉडी एवरेज वेलोसिटी बाहर करबा अछि बुझना सो लेट अस डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट द नॉर्मल वेलोसिटी फर्स्ट ठीक है ओके
सो देखो सो x दिया है करके a प्लस bt स्क्वायर तो आपको जब तुम लिखेगी dx by dt हला वेलोसिटी सो दिस इज इक्वल टू 0 आसीगल देन b into 2t आसीगल ताले दिस इज 2 into b वैल्यू केते पाइछ 2.5 and t धरंतु t is equal to 2 second और 4 second so first नेलिनु t is equal to say 2 seconds so t is equal to 2 seconds if लिख लियो 2 तो ये केते है गला same thing 2 to 4 times of this जैसे गला कितने 10 meter per second उसका understood or जैसे गला हमारा velocity but we have to find out average velocity so change in displacement अच्छा देखो change in displacement how will you write down or yes velocity हम बात करते हैं we have to find out the average velocity और simplify करी बुझुची देखो so yes गला we have to find out change in velocity so t is equal to देखो 2 seconds नउची यदि t is equal to 2 seconds नेलिमो उन्हें t is equal to 2 seconds आगा क्वेश्चन में दिया है so to find out the average velocity between t is equal to 2 and t is equal to 4 seconds so t is equal to 2 seconds सारे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनका से x2 में लेके a plus b into t जगह 2 पकड़ ले क्या कहते हैं ये 4 into 2 तो ये आएगा ना a plus 4 times of d ठीक है तो ये गोटे डिस्प्लेसमेंट मते मिल गला then again I have to find t is equal to 4 seconds ताले कौन लिखिए होते x4 is a plus b times या जगह रे t जगह रे कौन लिखिए 4 रा स्क्वायर लिखिए ताले ताला a plus 16 b लिखा ताले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एवरेज वेलोसिटी बाहर करिए एवरेज वेलोसिटी बाहर करेंगे एवरेज वेलोसिटी बाहर करेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x4 minus x2 divided by change in time टाइम हो चुका ना 4 minus 2 so x4 minus x2 का कितना है a plus 16b minus yes इला a plus 4b का minus रहेगा भीतर तो देखो a plus 4b divided by 4 minus 2 है ला so a plus 16 minus a minus 4b divided by 2 उसका लेसो plus a minus a 80 particular बच्चे लगे थे हम क्या करें 16 minus 4 times of b value calculate 2.5 as given in the question by 2 so this is equal to 16 minus 4 into 2.5 चार रहेगा था so 10 by 2 तो ये कितना है 16 minus 10 is 6 by 2 or this is equal to 3 meter per second so this is the average velocity okay I think everybody is clear with this ठीक है so ताको देखिए मैं जो समझता था वो बड़े वो कर ली जस्ट what is color देखिए मैं तो okay ठीक है same thing here also average velocity में बाहर कर ठीक है अच्छा so next question देखिए ना the ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building okay देखो ये गोटे बिल्डिंग है okay ठीक है multi-story building the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground okay the height from where the ball is thrown okay the ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building देखो तो ये गोटे multi-storied building नो so in multi-storied building ना top ରୁ गोटे ball को ऊपर को throw करा ठीक है जहां देखो क्वेश्चन कितनी velocity रे 20 meter per second that means ये गोटे ball जाउची ऊपर को ओके एंड यार वेलोसिटी कितनी इनिशियल वेलोसिटी रह जाई 20 मीटर पर सेकंड अच्छा जब वो इनिशियल वेलोसिटी अगर थ्रो के लिए 20 मीटर पर सेकंड गोटे पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हम 0 हो जाएगा ओके सो क्या फाइनल वेलोसिटी ठीक 0 हो गया ओके द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर दैट मींस दिस हाइट is given as how much 25 meter thank you the height of the point means a point to throw करा गया परंतु this is point p okay point p रू throw करा गया the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground so point p का height कितना रहेगा 25 meter from the ground how high the ball will rise ठीक है means कितनी हाइट जाए
बॉल गला कोठु देखिबा हम ना ग्राउंड केति के हाइट जाय बॉल को उठिछि केवल एई पॉइंट रो नै काहे रेफरेंस हम कोन कहिछि ग्राउंड रो 25 मीटर ऊपर गोटे पॉइंट अछि सेई पॉइंट रो गोटे बॉल थ्रो करा गला विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ताले हाउ हाई द बॉल विल राइज ताले हम कोठ ठेली देखुछि ग्राउंड ठेली देखुछि तो ग्राउंड केति के हाइट जाय बॉल तारे टोटल राइज करछि सो देखंतु इनिशियल वेलोसिटी जाना फाइनल velocity jana हमको so can we use the third equation of motion v square minus u square equal to 2as है कि फाइनल वेलोसिटी कितने 0 हो गला इनिशियल वेलोसिटी कितने 20 स्क्वायर देखो वेलोसिटी ऊपर को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तळु सो हम कोन नबा अपोजिट माने अपोजिट डायरेक्शन अछि ताले हम कोन नबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव नबा सो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ର वैल्यू होछ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु एग्जाम रे हम पाकर कैलकुलेटर अलाउड नहीं ठीक है आमे कोन करिबा आमे 10 नै के सॉल्व करिबा जहां भी हमर एक्चुअल आंसर बाहरिबो जहां भी हमर आंसर बाहरिबो सेटा एक्चुअल आंसर तो कोन हो टिके अधिका थिबो त आमे ऑप्शन देखिबा पाखा पाखी जो आंसर ताको टिक करिबा बुझबा ठीक है सो से कैलकुलेट बोले कोन लिखिबे वेलोसिटी ऊपर को एक्सेलरेशन तळ को सो -10 ठीक है -10 into say s तार देखो ये से वाला -400 दिस इज इक्वल टू -20 into s ये कटि गला 20 20 जा 400 तार केता आसला s इज इक्वल टू 20 मीटर बुझबा ताले एट केति के हाइट राइज कला 20 मीटर जाय बॉल राइज करछि बुझबा 20 मीटर हाइट जाय बॉल राइज करछि दैट मींस टोटल हाइट केता हैला हाउ हाई द बॉल विल राइज so 25 plus 20 which one that means therefore the ball will rise 45 meter from the ground okay 45 meter from the ground which one 25 plus 45 second देखो तो बच्चा जी कौन how long will it take before the ball hits the ground how long it will take before the ball hits the ground that means केते समय बॉल को लागेबो ग्राउंड को जस्ट टच करिवार टिके समय पूर्व बा एमति धरिया केते समय लागु छ हमको बॉल को आसी कि ग्राउंड को जस्ट हिट करिवा पाई माने वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कवर दिस डिस्टेंस 20 and 25 which is equal to total 45 meter बुझ पारे सो देखो बॉल तो ऊपर गला फाइनल वेलोसिटी 0 एबे तळु को जते बेला आछी फाइनल वेलोसिटी 0 जोटा सेटा ही इनिशियल वेलोसिटी हम हम टिके समय पूर्व डिस्कस करले तो जब मो बॉल ऊपर फेंगिली बॉल ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 एबे तळु बसिला बेलु फाइनल टा ही इनिशियल ही जीवो दैट इज इक्वल टू 0 बुझता धरो जदि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो केतिक डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर करछि 45 मोले के देले 45 अच्छा फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल ही जीवो फाइनल वेलोसिटी केते 0 ताले इनिशियल वेलोसिटी केते 0 तो 0 into t 0 ये कटि गला बचला हाफ देखो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी से डायरेक्शन है एक्सेलरेशन so it will be half into 10 into t square which value so this is equal to it will 45 equal to half into 10 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 45 हो जाए कितना है 90 is equal to 10 into t square तो इथु 0 0 कटि गला ताले t कोन हो प्लस माइनस 3 which value t square equal to 9 माने t कोन root over of 9 so t is equal to plus minus 3 so minus 3 time cannot be negative then t कोन 3 seconds बुझबै तो केवल 3 सेकंड में लागिबो बॉल कसिक तळे पहुंचबा पाई ठीक अछि समस्त देखंतु मु को भले सॉल्व करछि अप्रोच कोन होछि क्वेश्चन को सीधा फार्मूला पके दोचे डेटा या देछि या फार्मूला यूज होबो ना कांसेप्चुअली जाउछि क्वेश्चन को ठीक अछि ओके सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन first question हम ऑप्शन टिक कर सकते okay ठीक अछि so
Next, the relative velocity of the color question. Okay. Two parallel rail tracks run north to south. Because these are parallel tracks which we are run from north to south. Okay. Train A moves north with a speed of 54 km per hour. Because we are in north direction, we are in south direction. North, this is south. Okay. So north to जाଉଛି with a speed of 54 km per hour. Yes, train A. So that means velocity of train A is equal to plus 54 km per hour. Okay, plus 54 km per hour. Okay. Okay, so then it's a plus 54 km per hour. Okay, then the south from is 90 km per hour. So VB is minus 90 km per hour. ठीक है so minus में कहीं नहीं ले कहीं ना opposite direction ठीक है ऊपर plus नहीं लेता ना minus नहीं then what is the velocity of B with respect to A? What is the velocity of B with respect to A? This one is clear. So how will you find out velocity of B with respect to A? So हम already देखिए सर so velocity of B with respect to A means what? We have to find out VB minus VA लिखिए yes or no? VB minus VA लिखिए okay so VB है कहते हैं minus 90 km per hour okay minus 90 km per hour and yes से हमारा minus 54 km per hour ठीक है जब भी मैं चाहेंगे ऐसा यूनिट सॉल्व करिए okay you can convert this to meter per second okay so देखो तक meter per second को केमती कन्वर्ट कर ले सेटा गोटे जिनस मु शिखे देबो चाहिए किलोमीटर पर आवर को कर परिबे किंतु मीटर पर सेकंड को करूँ देखिए केमती कन्वर्सन भी ओके जदी देखंतु किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर नो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिबे देन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 बाय ओके जदी मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिबे देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 18 बाय 5 हेले कोन मिलिबो मते किलोमीटर पर आवर ठीक है सो एठी देखंतु हियर it is given that we have to find from 54 kilometers range and this is 90 kilometer per hour okay so in that case how can I find vb hela kete देखो तो vb hela 90 kilometer per hour तो मैं कौन करेंगे 90 को चेंज कर लेते हैं ओके minus 90 into 5 by 18 मल्टीप्लाई कर ले so 18 5 जा 90 18 5 जा 90 कल कितना है ये minus 25 मीटर पर सेकंड तो हम vb जगह लिख देंगे minus 25 मीटर पर सेकंड minus VA. So VA है 54. So this is 54 into 5 by 18. So 18 3 ja 54. कितना है minus 15 meter per second. So this is equal to what? Minus 40 meter per second. That's why minus 40 meter per second, which is what the velocity of B with respect to A. Very simple. VB minus VA हमारे लिखे केवल मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर ले ऐसा एरर को आने में नॉले किलोमीटर पर आवर में भी आपको हमें चाहिए सॉल्व कर दे पाएगा चलो क्लियर हो गया नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट बिट कौन सा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी अच्छा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होची कोन वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी ग्राउंड सब बड़े रेस्ट होची ना ग्राउंड इज ऑलवेज इन रेस्ट so that means this is velocity of ground minus velocity of b so velocity of ground होला कहते हैं 0 and b होला कहते हैं ना minus 90 km per hour so 90 km per hour means कितना होचे हमारा 25 मीटर पर सेकंड so this is minus 25 मीटर पर सेकंड so this is equal to कौन लिखिए I'll write down this as 25 simply plus मीटर पर second आपको चाहिए dB minus 0 minus 25 you can put okay this is 25 meter per second so that means ground to rest so this is velocity of the ground with respect to the body B okay clear all of it so next next कौन पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे
had it velocity of a monkey running on the roof of train A against its motion. बुझपारे माने कौन कहछि ये गोटा हमको this is the third bit we are solving. Okay, so this was your second bit. Okay, so ये गोटा train दिया गया. Okay, train আছে and से कौन कहछि question में velocity of a monkey running on the roof of train A. Okay, so train A रे move करछि. This is train A. Train A forward it is moving towards north. Okay, ये हो गया south. So velocity of train is plus 54 km per hour. The meter per second this is 15 meter per second रे जाउछि. So then question कौन कहै that the velocity of monkey running on the roof of train against its motion. Against its motion of the monkey केमिति जाउछि? Monkey is moving in opposite direction. Okay, monkey is running on train A and monkey is going in opposite direction. ठीक है with a velocity of 18 km per hour with respect to train A. এটা কোন velocity of monkey दिया है कि ना? ये कौन दिया है? Velocity of the monkey with respect to train A. Understood? So velocity of the monkey with respect to train A. So velocity of monkey with respect to train A. So this is Vm minus Va. A value दिया है. ना देखो तो monkey केमी जाउछि opposite direction में जाउछि train A. ठीक है तार कौन लिखिबे minus 18 km per hour is equal to velocity of monkey minus velocity of A. Why को लिखिबे because velocity of monkey is what opposite to the direction of train A. Okay, so कितने बोले 18 km per hour या मीटर पर सेकंड के लिए कौन होगा -5. This is equal to velocity of monkey minus this is velocity of A. So velocity of A होछि कौन 54 by 15 meter per second. इथु लिखिली -15. ठीक है ताले Vm केते हे जीरो 15 minus 5. So this is equal to 10 meter per second. So that is the velocity of the monkey is what 10 meter per second. The monkey opposite direction with the speed will see the velocity of monkey is 10 meter per second. Okay, clear all of you? Understood? Because ठीक है पानी पी दोची and then we'll continue. बुझी पाले समझते? Okay, so please type yes. Fine. So now go to the next question. Okay, so question वाले पढ़न समझते कौन को है मुझ पर a jet plane traveling at the speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at a speed 1500 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of the latter? Latter अर्थ कौन काहा को पचारछि latter means it काहा को कहछि आगे देला airplane traveling speed. Okay, then which ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. ठीक है what is the speed of the latter? Latter अर्थ कौन it is nothing but the combustion जो हैला combustion रे जो products रहउची ए products रा speed बुझ पारले means देखो this is your rocket ये रहला हमारा rocket. Okay, this is the rocket ऊपर गला तळो को बाहरला products of combustion by gases. So यार velocity but this is the meaning of latter. ठीक है यार velocity पचार with respect to an observer on the ground. Okay, ground तो सब बड़े rest ठीक है so person standing here will କେତେ के देखियो हम ग्राउंड रे तो ठिया के देखले that means ऊपर लिए जाउ से रॉकेट तळु बसेला products of combustion. Okay, so that means ऊपर डायरेक्शन में नेली पॉजिटिव तळ नेली मो डायरेक्शन negative ठीक है so that means velocity of airplane is plus
500 km per hour. That the rejects its products of combustion because velocity products of combustion with respect to at a speed of related to the jet plane. Okay, with respect to airplane, means velocity of combustion minus velocity of heat. Velocity of combustion minus velocity of heat. Okay, ये opposite direction velocity. So that means this is given as 1500 km. So this is the relative velocity of combustion. Combustion opposite रे same as monkey. That this is minus 1500 km per hour. So this is velocity of combustion minus velocity of jet plane केते कहैछि 500. ताले velocity of combustion products केते हबो आरपट नेली 500 minus 1500. This is equal to minus 1000 km per hour. बुझपारे समझते understood. So that means ये कौन हला ये हला relative velocity of the products of combustion. So this is a question from relative velocity, both important examination point. Okay, so let us move to the next question. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. Okay, so that means this is a police van. Okay, ये गोटे police van और या सामने कौन जाउछि गोटे चोर van. Okay, this is a police van and this is a thief's car. Okay, ये गोटे चोरर car. Now the police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour. So police van रा speed वाला कहते हैं 30 km per hour. ठीक है, and it fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction at a speed of 192 km per hour. उसका विचार थीप्स रा कार केते स्पीड रे जाउछि थीप कार जाउछि at a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, देखो muzzle speed of the bullet is 150 meter per second. Okay, so 150 meter per second means bullet रा speed ते कैलकुलेट करिबी bullet के छाडछि पुलिस बाहर कला muzzle speed तो कोन छै किछ ने bullet जो speed रे बाहर होतला bullet रा speed अपन कहले muzzle speed. एक्चुअली बंदूक सामने रे जो होल था सेठी गोटे मजल लागे मजल रो बुलेट बाहर तो मजल रो स्पीड जा बुलेट रो स्पीड सबले सेम. Okay, so mother speed means you will understand what speed of the bullet is 150 meter per second. तापर पचारते what speed does the bullet hit the thief's car? With what speed the bullet hit HIT? Okay, hit the thief's car. Okay, अच्छा now देखो सब जगह किलोमीटर पर आवर अछि किंतु बुलेट रो स्पीड केते कहै छै velocity of the bullet is given as 150 meter per second. देखो जदि आपको 80 जदि आपको मो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करबे पे चाहिए मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करे पहले कोन करबे पड़ियो मते 5 by 18 देखो 30 is not a multiple of 18 so सेकंड जो डायरेक्टली कटि जाई करियो डेसिमल आसो 192 is again 5 by 18. This is also not a multiple of 18 particle. किंतु जदि आपको किलोमीटर पर आवर करबे that means 150 into 18 by 5 multiply कर 150 आर multiple कटि गला 130 गला 30 एटे केते आसी गला 540 किलोमीटर पर आवर उसको सो 15 3 जा 15 30 आसी गला 30 into 18 so 540 किलोमीटर पर आवर. तो वर्तमान देखो बुलेट पुलिस जाउची पुलिस जाउची एंड बुलेट फायर करची दैट मींस बुलेट रा स्पीड कोन हो पुलिस वैन रा जति स्पीड प्लस बुलेट रा निज स्पीड ऐड हो सेति स्पीड रे जाई के याको हिट करिवो किंतु ये भी कोन होची हिट कार भी आपको जाउची दैट मींस बुलेट रा स्पीड वर्तमान टोटल केते हला बुलेट जो स्पीड रे फायर है 540 प्लस हैंड रा स्पीड 30 ठीक है टोटल सेति स्पीड रे बुलेट बाहर छी किंतु हिट केते स्पीड रे करिवो रिलेटिव वेलोसिटी रे हिट करिवो उसको जो रिलेटिव वेलोसिटी सीखरा को हिट करिवो. So that means ये आसीगला बाहर हो जाउची केते स्पीड रे 540 ठीक अछि देन पुलिस भेला 30 therefore I can write down velocity of the total velocity of bullet is equal to 540 plus 30 this is equal to 570 km per hour. Okay, then केते की स्पीड स्ट्राइक करिवो therefore velocity at which bullet will strike the thief's car is so 570 minus 192. Okay, 570 minus 192 572 सीधा
200 माइनस कर देले 370 370 रे 8 ऐड कर देबा में एना 192 अछि सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 378 किलोमीटर पर आवर दोस्तों देखिए स्पीड रे जाके स्ट्राइक करिवो क्लियर जदी धरन ठीक कार पुलिस ध्यान आडू बसथांता पुलिस एपुर सामने फायरिंग करथांता कोन हेतांता कार माने पुलिस ध्यान रो स्पीड प्लस बुलेट रो स्पीड सेती स्पीड रो बुलेट जाई थांता ओके सामने रो कार आछि ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमें प्लस कर दे थांते माइनस जगह रे बुझ पाते माइनस 570 प्लस 192 लिखाता सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी ओके क्लियर लगते तापरे Square a car moving along a straight line highway with the speed of 50 is brought to stop with a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Okay, and how long does it take before the car stop? Okay, now what is the retardation of the car and how long does it take? So, so car is moving with a straight line with a speed of 126 km per hour is brought to rest. So, what is the retardation of the car? Retardation means what? Negative acceleration. उसका नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन obviously stop ହେଲା so velocity zero ही गला कमी गला so acceleration कमी गो that is called retardation okay so देखो initial velocity केते अछि 126 km per hour okay final velocity केते हो गेला 0 okay so केते के डिस्टेंस 200 मीटर अच्छा retardation केते हम बाहर करियो बा acceleration केते बाहर कर परिबा हम so it दिया छै हमरा 200 मीटर okay so that means it देखो so I can 200 meter to kilometer convert kariba or this is already given meter per second jodi hame convert kariba 5 and this is written 126 okay so jodi ma apu divide koruchi okay so 126 into jodi apu meter per second convert kari kon likhi multiply kari 5 by 18 5 by 18 को multiply kale 9 2 ja 18 this is 9 1 ja 9 and 9 4 so 7 so that is equal 35 meter per second so I can write d square minus b square equal to 2as so final velocity 0 so this is 0 minus 35 square is equal to 2 times of a into कितनी 200 meter so that means a calculate करना देखो 35 रो स्क्वायर केमति करबा हम जो भी डिजिट 5 रे एंड होची तार मध्ये स्क्वायर बाहर करबा देन आगो 5 into 5 25 लिखि देले देन तार साइड कोन अछि 3 3 रो नेक्स्ट नंबर कोन 4 so 3 into 4 केते well so 1 2 to 5 हेगला 35 रो स्क्वायर सिमिलरली 45 तले केते 25 आगे लिखि 5 into 5 then 5 4 रो नेक्स्ट नंबर हला केते 5 so 20 so 2025 into the square of 45 उसको लेते हैं स्क्वायर और क्यूब नंबर हमारे करने पड़ेगा पहले जल्दी क्वेश्चन कर करिए so a divided by 2 into वो लेके देले 200 ओके 200 लिख दिला केते लिख परिमु 1225 divided by 400 तो 400 means 4 रे काटिबा तार मध्ये दुईटा 0 अछि 4 3 जा 0 ठीक अछि देन 2 80 गला 2 80 गले हमें पकेबा डेसिमल ठीक अछि so 1225 हम डिवाइड करी 4 4 3 जा 12 80 गला 0 डेसिमल 2 ठीक अछि पॉइंट पड़ी गला डेसिमल पड़ला so decimal पड़ला 0 and 20 ठीक है so this is 4 5 80 गला 20 0 and then third was 5 okay 1 is 4 more calculated so this is 1 okay and then again you can put 0 to 0 so देखो तो इतने जीवा दरकार 3.51 but it कितना रहेगा हमारा we have again 200 okay so that's the five just okay so simplify the problem understood okay so somewhere around this is 400 so this is 3.88 bar कर देना है ठीक है so to solve this 3.5 we consider 3.88 and divided by our regular number 100 okay so this is okay which minus sign ऐसे वाला okay so 2 into 2 ठीक है so this is okay minus sign ऐसे वाला so ऐसे लेंगे 0.0388 I can write meter per second square कौन होची retardation हो जाଉଛି how long does it take to stop this I have to find out the time उसका तो time कितना रहेगा t is equal to u plus at I can put okay so v value is 0 this is equal to u already I know
ठीक है 35 ओके and plus with retardation minus 0.03 and from this you can find out what the time taken बुझिपार understood so आज का टाइम हो जाइए ओके प्रीवियस में अपन बीसीए वाला करले बट क्वेश्चन रे बीसीए with respect to ground थिला yes देखंतु so velocity of c with respect to a करले yes with respect to ground थिला देखंतु क्या था टाइम को सेमती करली इसी yes देखो ये कौन सा है with respect to observer on the ground so ground rest running so केमी तो बात करें first I have to find out the velocity of this aircraft with respect to ground so velocity of aircraft with respect to ground कौन होगा va minus vg and vg value is what 0 कहीं ground तो rest है ताले इतनी कौन लिख करें va with respect to g is equal to va ही है मुझ पर okay and next देखो speed of the latter with respect to observer on the ground so that means यार speed latter की speed होती कहते हैं vc तो vc में बाहर कर दे यहाँ पर अब स्टेप को कौन लिखेंगे the velocity of the latter with respect to ground means velocity of products of combustion with respect to ground is vc minus vg तो ये minus 1000 minus ground तक 0 पड़ेगा which is equal to what minus 1000 kilometer per hour ठीक है तो सेट में आपको लिखने के लिए कहीं ना हो बुझला बाटे देख पारे रिकॉर्डिंग मछु दे को हम कहले कोन ग्राउंड रेस्ट अछि ओके बुझ पारले क्लियर अभिप्सा एनी डाउट ओके विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड ना कहीं ग्राउंड रेस्ट तो से पे माइनस के 0 असुविधा मु से पे सीधा लिखले माइनस 1000 ठीक अछि बुझ पाइले सो प्लीज टाइप यस in the chat box okay so I think it is clear all of you fine so thank you everybody so good night to all I hope it is clear to you so we will continue in the next class because with a new chapter that is motion in two dimension okay thank you everybody हाँ संघर्ष इंटरनेशनल स्टैंडर्ड